network unavailability and the problem of team software. So I could not connect with you guys. I'm really sorry for that. I tried my best. Even the technical team tried their best, but we could not connect. And till now, we had just completed one class, that is theory of demand. And I don't know, you guys can send something in chat box or not. I don't know. And one thing, some of the students actually they were trying to approach me in team software, but like I saw hundreds of messages, so I got really scared. I really request to the Microsoft team, and the technical team, that they can make a group of a class, so we can interact it in a much better way. If like somebody is asking in a group, like a WhatsApp group or something, but not actually WhatsApp, but the team group, I think they should make. So I don't know. Can you guys like send the questions back or something? Are you allowed or not? That I don't know. And so today actually we will start with theory of supply. In the last class we had discussed about theory of demand. हम लोगों ने देखा था कि like if the price increases of a commodity, then the demand of that commodity decreases. So वहाँ पर theory of demand, because some of the participants they said कि मैम अब थोड़ा ज़्यादा fast हो रहा है आपका पढ़ाना, because we have limited time and limited time में मुझे PPT cover करनी थी, so that's what I was like little bit paced up, but मैं अभी try करूँगी कि I'll teach you slowly. And just quick revision of the theory of demand is the law of demand. What does it say? It says that if prices will increase of a commodity, the demand will decrease. अब like just for an example, अब देखो कि कोई भी commodity market में आती है, like अगर उसका कल price बढ़ जाता है, then you always tend to decrease the amount of the quantity you consume, because you have limited budget constraint. So we had seen that downward sloping demand curve. हमने उसमें देखा था कि जैसे जैसे जो prices increase होगा, वैसे वैसे quantity demanded कम हो जाएगा. And what is actually a demand? That also we discussed. What is demand? Demand is not only the willingness. मतलब simple desire नहीं है that you want something and that is a demand. No. So your demand is what? If you are desiring something and that is backed by your affordability. मतलब आप चाहते हो वो चीज, but you can actually afford that too. And at a particular point of time. So whenever we will explain the demand, demand is what? The willingness of the commodity backed by affordability at a particular time. So ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है. Simple desire is not the demand. And जैसे जैसे जो हमारा प्राइस बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, the quantity demanded will decrease. अब उसमें एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड एंड सब्स्टिट्यूटेबल्स होते हैं, लाइक एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, लाइक वी विल डिस्कस दैट लेटर. But generally, theory of demand says there is an inverse relationship between price and quantity demanded. So quantity demanded will decrease whenever the prices will be increasing. So now we will come to theory of supply. In last class we discussed about theory of demand कि ऐसे ऐसे inverse relationship है. The price is gonna increase, it will decrease the commodity quantity demanded of that commodity. और अगर prices decrease हो जाते हैं तो वो quantity की जो consumption है या demand है वो बढ़ जाएगी. But theory of supply, यहाँ पर हम देखेंगे it's totally opposite like of the demand, whatever the theory of demand says. यहाँ पर proportionate relationship है. यहाँ पर जितना हमारा प्राइस बढ़ेगा उतनी हमारी जो सप्लाई है दैट विल इंक्रीज. सो सप्लाई और प्राइस के बीच में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. देयर इन द डिमांड कर्व, थ्योरी ऑफ डिमांड जब हम पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे कि प्राइस और कमोडिटी क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं हम, उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. लाइक अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. But in the supply thing, whenever we are saying like there is a like increase in the prices, so definitely there will be increase in sale also. So supply is the quantity of a commodity which is offered for sale at a given price during some particular time. देखो क्या होता है ना, during some particular time, why we are considering this during some particular time, why a time is very important framework, because demand obviously it's a constant changing thing.
हम एक टाइम पे प्राइस की बात कर रहे हैं और एक टाइम पे उस वक्त डिमांड कितनी है उस वक्त बात कर रहे हैं. सो दैट इज लाइक वॉट एवर वी आर डिमांडिंग और वॉट एवर वी आर सप्लाइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट that during some particular time. Like suppose there was a demand for the like oranges in a week, in this week, or on Monday there was a demand of oranges is on that price is that much. और ऐसे ही supplied okay, on this much of 50 rupees per kg, you know, there is a, like a supply of 500 kg oranges in a week. So it's like we just make that some particular time and particular price and that quantity is supplied or demanded. So supply में क्या होता है? Supply में whatever the quantity of a commodity which is offered for sale. मतलब हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस दैट इज गिवन और पर्टिकुलर टाइम दैट इज गिवन, उस पर हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो दैट इज आवर सप्लाई. अब सप्लाई एंड स्टॉक, उसको समझने के लिए स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल क्वांटिटी दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ सर्टेन टाइम. देखो स्टॉक क्या होता है, लाइक यू हैड सीन इन द मार्केट, इट्स नॉट अ फ्लो सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लाइक हाउ मच ऑफ द टोटल कमोडिटी इज टोटल क्वांटिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड स्टॉक. अब सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक तो मार्केट में है बट एट पर्टिकुलर डे व्हाट इज सप्लाइड. तो सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब अगर स्टॉक इतना है so we are just supplying this much, so supply is that part of the stock which a seller is ready to sell at a certain price during a certain time. So the supply is the part of the stock which is actually brought into the market. तो supply actually वो stock का वो part है जो market में लाई गई है. So you know it's a particular part. So stock तो बहुत बड़ा है. Supply is that quantity which is actually you know brought up into the market, brought into the market. So supply and quantity supply. अब देखो supply refers to various quantities offered for sale at different possible prices. हम उसको बोलेंगे कि supply. What is supply? So different prices हैं, different prices पे whatever we are offering, whatever quantity we are offering to supply. And quantity supplied, what is that? It refers to a specific quantity of a commodity that the producers are ready to sell at a specific price of the commodity. So it refers to a specific quantity. Quantity मतलब हमने supply में बात किया, we had talked about like there is a price of 50 rupees kg oranges, 60 rupees kg oranges, 70 rupees kg oranges. Then on different prices, how much quantity will be selling or we will be supplying. But quantity supplied is means that we have a specific quantity. Means if we talk about 500 kg oranges, that at what price 500 kg oranges will be supplied. Okay, so that should be clear in mind. Supply को जब हम consider करते हैं, we are considering the different possible prices पे different quantity. But quantity supplied is actually that quantity which is coming to the market at a particular price. So now we will see that individual supply and the market supply. देखो एक डेफिनेटली यू नो मार्केट हमारा क्या है, मार्केट में देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेलर्स, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बायर्स, सो वी हैव यू नो मेनी इंडिविजुअल्स. सो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर करती है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय एन इंडिविजुअल फर्म. सो सिंपल, जहां पर एक फर्म डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री. सो हियर वी हैव लाइक मेनी फर्म्स विद अस. तो जितनी भी सब फर्म, सपोज करो फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है कुछ मटेरियल लाइक एट अ पर्टिकुलर प्राइस. सपोज करो फर्म ए लाइक 10,000 मोबाइल कंपनी है कोई, लाइक 10,000 मोबाइल फर्म ए सप्लाई कर रही है मार्केट में लाइक 20,000 के प्राइस पर. तो फर्म बी जो है वो सिंपल 20,000 के प्राइसेस पे वो 12,000 सप्लाई कर रही है. सो दैट इज लाइक डिपेंडिंग ऑन द वेराइटी, लाइक जो भी उनकी कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग. सो वी विल सी लाइक ये जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं व्हेन दे कम टुगेदर, then we decide about the market supply कि total phones कितने market में available हैं. So firm A supply कर रही है, firm B supply कर रही है, ऐसे plenty of firms हैं XYZ like firms are supplying. So we will aggregate that sort of a supply. So supply, market supply refers to the sum total of various quantities offered for sale by the individual firms at different prices. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है different prices पे, because you know it depends on the firm's you know capability or the capacity, like whatever the cost they are bearing, whatever the price they are charging. So different prices for different quantities they are supplying, and we will aggregate that sum of the supply of different firms. So I hope that is clear. Individual supply क्या होगी और market supply क्या होगी. Supply schedule. देखो supply schedule को समझने के लिए जैसे हमने demand schedule, if you remember by this table, maybe because class को बहुत ज़्यादा time हो गया, theory of demand की जो class हुई थी. So there we had same sort of schedule. Supply schedule में क्या था, is a tabular statement showing different quantities at different prices.
तो ऐसे ही डिफरेंट प्राइसेस पर डिमांडेड डिफरेंट क्वांटिटीज वहां पे हमने दिखा रखी थी। यहाँ पर क्या होगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो डेफिनेटली व्हेन एवर द प्राइस विल बी इंक्रीजिंग, द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर को तो ज्यादा पैसा चाहिए ना। सो व्हाट लाइक इफ द प्राइसेस ऑफ द सम पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस, तो सेलर क्या करेगा, सेलर सोचेगा कि उसको ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो वो ज्यादा सेल करने की कोशिश करेगा। सो प्राइस ऑफ दैट आइसक्रीम, सपोज करो देयर इज लाइक 5 रुपीज आइसक्रीम पर कोई क्वांटिटी सप्लाई नहीं की जा रही है आइसक्रीम की, 10 रुपीज पर 10 यूनिट्स सप्लाई की जाती हैं, 15 रुपीज पर 20 सप्लाई की जाती हैं, 20 रुपीज पर 30 सप्लाई की जाती हैं। सो यहाँ पर सप्लाई स्केड्यूल में वी विल सी कि प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। तो दैट इज कॉल्ड द सप्लाई स्केड्यूल। सिंपल, हमें, मैं आपको इसलिए बार बार रिमाइंड करा रही हूँ बिकॉज वी हैड डन थ्योरी ऑफ डिमांड, और इसमें डिमांड स्केड्यूल हम देखा था, थोड़ा टाइम हो गया, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन। डिमांड स्केड्यूल में क्या होगा, जब एक साइड प्राइसेस बढ़ेंगे, सो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ने पर जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज हमारी जो डिमांड है वो प्राइस बढ़ने की वजह से कम हो गई है। सो देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो दोनों नंबर्स सप्लाई स्केड्यूल में बढ़ रहे हैं, प्राइसेस के नंबर्स भी एंड क्वांटिटी सप्लाई के नंबर भी। आई होप क्लियर। मैं एक बार देख लेती हूँ इफ देयर इज सम चैट बॉक्स थिंग और नॉट, लाइक आई थिंक यू गाइस कैन नॉट आस्क क्वेश्चन, शो क्वेश्चन एंड आंसर्स में कुछ शो नहीं कर रहा है। सो या लेट्स कंटिन्यू। अब नाउ टेबल 2 में हम मार्केट सप्लाई स्केड्यूल देख रहे हैं। देखो यहाँ पर जो हमने पहले वाला स्केड्यूल देखा, दैट इज दिस वन, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ओके, इंडिविजुअल फॉर्म। यहाँ पर whenever we have to talk about that market supply, so we are talking about firm A, firm B and n number of firms, कितनी भी फॉर्म्स मार्केट में है। So prices of ice cream 5 रुपीज पर, फॉर्म A भी जीरो क्वांटिटी दे रही है, B भी जीरो क्वांटिटी दे रही है, बट प्राइस 10 रुपीज पर, फॉर्म A 10 यूनिट्स सेल कर रही है और फॉर्म B जो है वो 5 यूनिट सेल कर रही है। ऐसे 15 रुपीज पर 20 यूनिट सेल कर रही है एंड फॉर्म B 10 यूनिट सेल कर रही है। सो वी विल एग्रीगेट। तो एग्रीगेट हमने कैसे किया, हम 10 रुपीज पर देखेंगे, 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15, मीन्स 10 रुपीज पर देयर इज अ 15 यूनिट्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सप्लाई। ओके, so whenever there is an individual firm, so we are just saying कि 10 rupees per firm A 10 units दे रही है, but whenever we are calculating about the market supply curve, then we will aggregate these both firms or maybe n number of firms, अगर हमारे पास और भी firms आती हैं then we will aggregate it. So जब आपसे theory of supply पूछी जाएगी and there is a you will be asked about the relationship between the price and the supplied quantity, then you will make this a schedule, okay? और अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि what is like individual market supply curve and what is like market supply curve or individual supply curve, तो दोनों में क्या difference है? In market you will aggregate, you will make a sum. Now क्वांटिटी सप्लाइड आप देखो, एज दिस कर्व इज शोन, आप यहाँ पे देखोगे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब ये पॉजिटिवली स्लोप किया गया है, एट वन साइड वर्टिकल एक्सेस पे हमने प्राइस लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे वी हैव टेकन क्वांटिटी सप्लाई, और दोनों क्वांटिटी पर क्या हो रहा है, बढ़ रही है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो बढ़ती जा रही है। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब भी हम इसको कंबाइन करेंगे, लाइक इफ यू कैन सी माय कर्सर ओवर हियर, सो यू कैन जस्ट सी कि ये जो हमारा लाइक 15 पर 16 क्वांटिटी सेल हो रही है, 20 पर 4 सेल हो रही है। तो जैसे जैसे हम प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सप्लाइड क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। सो दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। डिमांड स्केड्यूल में इफ यू रिमेंबर, डिमांड कर्व जो था वो टोटली अपोजिट था, दैट वाज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग में क्या आता है, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लाइक क्रॉस अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ, तो द डाउनवर्ड स्लोपिंग सेज जितना प्राइसेस बढ़ता जाएगा तो उतनी हमारी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो हम जब ऐसे इसको एसोसिएट करेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग से, तो देयर विल बी अ इनवर्स रिलेशनशिप शोन बाय द कर्व। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। That is very bad thing otherwise, but yeah, market supply curve is यहाँ पर total quantity supplied and the total price, like at different prices how much quantity is being supplied in the market. So that is a positively sloped curve. I hope that is clear to you. अब now when we talk about supply function, because it's a functional relationship, quantity supplied of a commodity and factors affecting it. because supply जो भी होती है ना, like it is affected by so many factors. ऐसा ही नहीं है कि simple price ही decide कर रहे हैं, and so there are other things too. अब सपोज करो लाइक कमोडिटी की जो भी फॉर्म है डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इटसेल्फ, हम वो समझ गए कि ओके देयर इज अ प्राइसेस पर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी। बट देयर आर अदर थिंग्स लाइक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सपोज करो किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो किसी कमोडिटी की ओनली 10 यूनिट्स अलाउ कर रही है प्रोड्यूस करने के लिए, सो वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस मोर देन दैट। सो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशली लेबर कितने कॉस्ट पे अवेलेबल है, लैंड कितने, लाइक कैपिटल कितने कॉस्ट पे अवेलेबल है, इवन दैट डिसाइड्स आवर सप्लाई क्वांटिटी। Objective of the firm,
लाइक ऑब्जेक्टिव मीन्स देखो, अब अगर हम गवर्नमेंट को देखें या प्राइवेट फॉर्म को देखें तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंट इन ऑब्जेक्टिव्स. गवर्नमेंट इज सप्लाइंग टू द सोसाइटी फॉर सोसाइटी वेलफेयर एंड प्राइवेट फॉर्म्स क्या है, दे आर एक्चुअली इन द मार्केट फॉर द प्रॉफिट पर्पज. So objective भी different होता है. So whenever there is like a different sort of objectives, so or state of technology or cost of factors of production, so definitely the supply of a commodity will be changing accordingly. So अब अगर हम इसको just a minute mathematically अलग उसमें देख लेते हैं. Sorry, yeah. अगर हम इसको mathematically देखें, so mathematically how will we write this supply function? So it explains the relationship between the supply of a commodity and the factors determining its supply. Like which factors are actually determining the supply. So we can better represent the supply function in the form of the following equation. What is the equation? Sx हमने लिखा, that is supply of particular x commodity, and is equal to F means function of. मतलब जो ये supply of x commodity है, it is a function of what? Price of the commodity x, price of the inputs, like जो भी हमने factors of production लिए हैं, technology, weather or whatever. जैसे अब वेदर में देखो, लाइक सपोज करो देयर इज अ एग्रीकल्चर कमोडिटी और वेदर रेन ज्यादा नहीं हुई है तो डेफिनेटली क्रॉप जो होगी वो डिक्रीज हो गई, बिकॉज मतलब इरिगेशन नहीं हो पाया, या लाइक एक जितना वाटर एक क्रॉप को चाहिए था वो नहीं हो पाया. दैट्स व्हाई लाइक द क्रॉप हैड डिक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप हैड डिक्रीज्ड. सो डेफिनेटली इवन वेदर कंडीशन मैटर्स. सो हर चीज के सप्लाई में, लाइक वट एवर द कमोडिटी इज, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी सप्लाई इन द मार्केट. सिंपल प्राइसेस से ये चीजें डिसाइड नहीं होती. सो other चीजों से भी डिसाइड होती हैं. But whenever we are actually talking about the price over here, so we are saying price is a big influencer, but whenever we are talking about the law of supply, like theory of supply, it says there is a positive relationship, but we are not saying that only the price is responsible. Other factors भी हैं, but यहाँ पर हम ceteris paribus situation लेके चलते हैं. Ceteris paribus means like that thing is like other things remains constant. मतलब हम यहाँ पर जब हम theory of supply के normal rule की बात करते हैं कि then when prices will increase, the quantity supply will increase. तो उस टाइम पर हम जितने भी अदर फैक्टर्स जो हमने कंसिडर किए हम उनको लाइक सोचते हैं कि वो कांस्टेंट है, कुछ और चीजें चेंज नहीं हो रही. नॉट इवन टेक्नोलॉजी, नॉट इवन वेदर, नॉट इवन प्राइसेस ऑफ द इनपुट. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई. अब प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी जो हमने फर्स्ट गुड लिया, दैट इज एट अ हायर प्राइस producer offers more quantity of the commodity for sale and at a lower price less quantity of the commodity is offered for sale. So यहाँ पर जितना ज्यादा प्राइस होगा, producer for the more profit, they will try to have more sale. So there is a direct relationship between price and the quantity supply, and that is illustrated जो कि हमने law of supply में देख लिया था, law schedule में, मतलब law of supply के schedule में देख लिया था. जैसे जैसे prices बढ़ रहे थे वैसे वैसे quantity sold increase हो रही थी. So the price of the related goods. अब देखो related goods का क्या मतलब है, वो substitute भी हो सकते हैं, complementary भी हो सकते हैं. अब supply of a commodity depends upon the prices of its related goods, like especially the substitute goods. अब suppose करो अगर टी का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोग they will shift to coffee. टी एंड कॉफी दे आर मोस्ट लाइक हॉट बेवरेजेस. सो डेफिनेटली अगर टी का प्राइसेस बढ़ रहा है तो रिलेटिव गुड कौन सा है, रिलेटिव सब्स्टिट्यूट कौन सा है, कॉफी. पीपल विल शिफ्ट themselves to the coffee. So if the prices of X commodity remains constant and the price of substitute good Z increases, मतलब कॉफी के प्राइसेस में कुछ नहीं चेंज हुआ है, टी के प्राइसेस में चेंज हो गया, तो द प्रोड्यूसर्स वुड प्रेफर टू प्रोड्यूस सब्स्टिट्यूट गुड Z. मतलब यहाँ पर अगर टी का प्राइसेस बढ़ गया है तो डेफिनेटली टी को ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे प्रोड्यूसर्स. दे वुड प्रेफर बिकॉज दे विल हैव मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट बिकॉज टी का प्राइस बढ़ गया. एज अ रिजल्ट द सप्लाई कमोडिटीज विल डिक्रीज एंड अदर गुड विल इंक्रीज. तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जिसका भी प्राइस इंक्रीज होगा डेफिनेटली उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे जो प्रोड्यूसर्स हैं दे वांट टू हैव मोर प्रॉफिट. बट व्हेन वी विल सी द डिमांड, सो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होगा, हमारी टी की सप्लाई तो बढ़ गई है बिकॉज टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, बट द डिमांड फॉर टी विल बी डिक्रीजिंग. अब किस प्राइस पर दोनों इक्विलिब्रियम सेट होंगे, दैट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मार्केट देयर इज अ इक्वेशन, देयर इज अ इक्विलिब्रियम between demanded quantity and the supplied quantity. So यहाँ पर अभी हम because we are talking about the factors determining supply. So now the state of technology. State of technology भी देखो कितना different करता है. A change of the technology of production. Suppose करो कि पहले हमारे पास कुछ अच्छी machines नहीं थी produce करने के लिए. So we were just producing 10 units for particular commodity. But now we have good machinery. Now we have maybe good technology. So we are trying to produce 50 units of that particular commodity. So state of technology, that's why it changes the things. आप पहले भी देखोगे like life style में, like your parents' time, that life was like little bit slow. Right now we have many gadgets with us. We have we have microwave technology जिसमें एकदम से we can just heat the food just within seconds. So the thing is, the technology is increasing and that's why the production of some particular commodity is increasing because of the technological advance. अब आते हैं cost of factors of production.
सपोज करो लाइक देयर इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेबर के प्राइस बढ़ जाते हैं, या पर्टिकुलर किसी लैंड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई जो होगी विल फॉल definitely when there is more cost for the production of particular amount of the quantity, then the supply will be decreasing. हम ना objective of firm, तो फर्म का ऑब्जेक्टिव अगर हम कैसे डिसाइड करना है हमें, समटाइम्स अ फर्म मे बी इंड्यूस्ड टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ अ गुड नॉट बिकॉज इट इज मोर प्रॉफिटेबल बट बिकॉज इट इज सप्लाई एज अ सोर्स ऑफ अ स्टेटस एंड प्रेस्टीज इन द मार्केट। लाइकवाइज सप्लाई इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रायोरिटी गिवन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देखो सपोज करो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं नेसेसिटी, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लग्जरी गुड्स। सो नेसेसिटी गुड्स की ऑब्वियसली डिपेंड करती है कि लोगों की नीड कितनी है उसके बेस पर। बट सम प्रोडक्ट्स मतलब वो सिंपल इसलिए मार्केट में आते हैं बिकॉज लाइक इट बिलोंग्स टू सम स्टेटस और समथिंग, तो उनका जो सप्लाई होता है वो लाइक लिमिटेड होता है। सो जैसे सपोज करो कि रोल्स रॉयस जो है लाइक द हाईएस्ट प्राइस, पर उसकी हाईएस्ट प्राइस पे हाईयर क्वांटिटी सप्लाई नहीं हो रही है। रोल्स रॉयस जो कार है, so we are just like we have the higher price, but we don't have that much of Rolls Royce in the market. Why? Because it is actually like exclusive. It is for the status, so or prestige in the market. So we will never say. So there are some exceptions also that depends on the objective of the firm, like for what the project is, like the commodity is being produced. So necessity good है या क्या है, okay? So the law of supply क्या state करता है that other things remaining constant, मतलब जितने भी हमने अभी factors की बात की which were determining the law of supply, like cost of production and the substitute available in the market, the objective of the firm and the cost of like technology available, तो हम सब factors को constant लेके चलते हैं, and then what it states, law of supply states that other things remaining constant, quantity supplied of a commodity increases with increase in the price and decreases with the fall in the price. तो मतलब जैसे जैसे प्राइस में फॉल होगा ऐसे ऐसे क्वांटिटी सप्लाइड विल बी डिक्रीजिंग। सो दैट इज अ सप्लाई स्केड्यूल, सिंपल व्हिच वी हैड सीन अर्लियर। सो दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। राइट नाउ लॉ ऑफ सप्लाई वी हैड सीन ऑब्वियसली द पॉजिटिवली स्लोप कर्व, यहाँ पर भी सेम थिंग इज शोन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाई है एंड देन वर्टिकल एक्सिस पे वी आर शोइंग द प्राइस एंड दैट सेम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिवली स्लोप वी आर मेकिंग। नाउ assumptions क्या है? Assumptions देखो, कोई भी थ्योरी whatever we read like in economics, we are making some assumptions because बहुत सारे factors हैं which change and which will affect our whatever the theory we are applying. So यहाँ पर some assumptions we have to take. तो assumptions क्या है? जो भी other factors हैं वो remain same, like they will remain same. Other factors मतलब price of the other related good, मतलब जो भी substitute available है उसका price change नहीं होगा, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होगा, गोल ऑफ फर्म भी मतलब जो भी फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो भी चेंज नहीं होगा, और गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी भी चेंज नहीं होगी। So through these assumptions, we are actually stating that law of supply, that if prices going to increase, then there will be more supply. क्योंकि हमारा देखो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया रोल्स रॉयस के केस में, तो डेफिनेटली प्राइस तो हायर है, बट वी आर नॉट सेइंग कि हमारी सप्लाई भी बढ़ गई है। So definitely, like we have to see that sort of a things like ceteris paribus situation. We have to assume some particular things, then only we can state the law of supply. अब exceptions भी हैं। Exceptions कैसे हैं? Law does not apply strictly to the agriculture products whose supply is governed by natural resources. देखो क्या होता है ना, we cannot just increase some particular quantity like of some products. Like कुछ जो products हैं जो जितने produce हो सकते हैं उतना ही like जितना land का capacity है या जितना like land उसको available है, we cannot increase the quantity just like that. So supply of goods having social distinction will remain limited even if their price lends to rise. जो कि मैंने अभी आपको रोल्स रॉयस या कोई भी लग्जरी कार का एग्जांपल दिया, चाहे उनके प्राइसेस बढ़ जाएं, but obviously the quantity will be limited because that like has different sort of motive, social distinction. अब now sellers may be willing to sell more units of a perishable commodity at a lower price. अब देखो perishable commodity because आप suppose करो like सुबह जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं, शाम तक आते आते उनका प्राइसेस जो है वेजिटेबल्स का डिक्रीज हो जाता है बिकॉज द वेजिटेबल्स पेरिशेबल है, वो कल तक या परसों तक खराब हो जाएंगे, यू नो। सो द थिंग इज सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स, मे बी वो ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आज ही सेल करते हैं अगर पेरिशेबल कमोडिटी है तो वो लोअर प्राइसेस पे भी दे विल ट्राई टू सेल इट। सो दीज आर द एक्सेप्शंस, मतलब यहाँ पर जो जनरल लॉ ऑफ डिमांड है, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई है, वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। So whenever we are looking for law of supply, we are talking about different sort of exceptions जहाँ पर law of supply work नहीं कर रहा है। अब now changes in quantity supplied movement, एक होता है देखो expansion in supply, एक होता है contraction of supply। अब expansion of supply और contraction of supply में you have to understand refers to rise in supply due to the rise in the price of the good। देखो expansion और contraction जब supply का होगा तो we are talking along the curve situation, क्योंकि हमने जो डायग्राम लिया था लाइक वर्टिकल एक्सेस पे प्राइसेस लिए थे
हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे वी हैड टेकन द क्वांटिटी। तो जब हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमने कर्व बनाया था पॉजिटिवली स्लोप कर्व, तो वी आर टॉकिंग अलोंग द कर्व मूवमेंट, like it refers to rise in supply due to the rise in price of the good. Contraction means it refers to the fall in supply due to the fall in the good. So it results, expansion क्या कहता है, upward movement of the curve. Along the curve movement है, तो जैसे जैसे expansion होगा, price rise होगा, हमारी quantity demanded बढ़ती जाएगी. So contraction of supply का क्या होगा, it results in the downward movement, मतलब हमारी जो supply है वो कम होती जाएगी. अब नाउ स्केड्यूल में कैसे दिखा रखा है, 1 5 ऑब्वियसली हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई, राइज इन प्राइस, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. यहाँ पर 5 से प्राइस 1 हुआ, लेफ्ट राइट साइड पे देखिएगा, एंड देन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड फॉल इन प्राइस एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड द कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इट इज लाइक सेम सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट अलोंग द कर्व मूवमेंट, चाहे वो डिक्रीज में हो चाहे वो इंक्रीज में हो. अब एक्सपेंशन में आप देखोगे ए से जो बी मूवमेंट है, लाइक ए पॉइंट से अगर हम इसी अलोंग द कर्व चलें, तो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई. मींस फर्स्ट वी वर ऑन ए पॉइंट, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज्ड. बट द कॉन्ट्रैक्शन इज अपोजिट साइड, ए इस साइड है, राइट साइड पे, एंड बी, मतलब वी आर कमिंग बैक टू लाइक द अर्लियर पोजीशन. मींस वी आर decreasing the quantity supplied with decreasing prices. So here in this diagram, like the movement is on the opposite side, so that is the contraction of supply. Now change in quantity supplied, that is a movement, and change in supply shift. देखो अब आता है shifting of the supply curve. Like अभी हमने बात की expansion और contraction की, जो कि simple prices की वजह से हो रहा है और along the curve हो रहा है. ये चीज हमेशा ध्यान में रखती है कि along the curve change and the shifts in demand curve or shifts in the supply curve are because of the different reasons. Changes in the quantity supplied, movement along the supply curve क्या होगा? It is expansion, जो कि it refers to the rise in supply due to fall in prices, और contraction means it refers to the fall in supply due to the rise in prices of the good. So यहाँ पर like other things remaining constant. But when we talk about the shift, हम उसको बोलेंगे increase in supply और decrease in supply. मतलब वहाँ पर हम expansion और contraction word को use नहीं करेंगे. We will talk about other factors which were determining the supply. अब other factors क्या थे? सपोज करो पॉपुलेशन बढ़ गई, या लाइक डिमांड बढ़ गई किसी पर्टिकुलर चीज की, और प्रेफरेंस बढ़ गई, या कॉस्ट ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो कम हो गई, और टेक्नोलॉजी कोई अच्छी आ गई, सो देयर विल बी इंक्रीज. सो इट मींस मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस, मतलब प्राइसेस चेंज नहीं हुआ है वहाँ पे, बट देयर इज अ शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. तो जैसे फॉरवर्ड शिफ्ट मींस अगर ये पॉजिटिव स्लोप कर्व था, सो वी हैड इंक्रीज, लाइक हमारा जो फॉरवर्ड मूवमेंट आ गया, राइटवर्ड मूवमेंट आ गया, मींस हमारी सप्लाई बढ़ गई एट अ पर्टिकुलर प्राइस. प्राइसेस सेम रहेंगे बिकॉज प्राइसेस की वजह से यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स चेंज हुए. सो इट रिजल्ट्स इन फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. सो इट मींस लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट रिजल्ट्स इन बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व. अब अगर सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होता है, तो डेफिनेटली इट सेज दैट देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई एट द सेम प्राइसेस ऑफ गुड. अब जो आप नीचे स्केड्यूल में देखोगे, यहाँ पर प्राइसेस ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट साइड पे देखिएगा, 10 रुपीज, मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुई है बट प्राइस सेम है. सेम यहाँ पर डिक्रीज में क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हुई है बट प्राइस सेम है. सो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइसेस, बट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द सप्लाई बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. मतलब यहाँ पर प्राइस वर्क नहीं कर रहा है, अदर फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं. नाउ इंक्रीज इन सप्लाई, जो कि हमने देखा फॉरवर्ड मूवमेंट, इंक्रीज इन सप्लाई का जो हम पॉजिटिव स्लोप कर्व दिखाएंगे, हम ऐसे दिखाएंगे कि देयर इज अ, ये सप्लाई कर्व था एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स इसी प्राइस पर द क्वांटिटी इज दिस मच ऑफ सप्लाई, लाइक क्वांटिटी बढ़ गई, ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. डिक्रीज इन सप्लाई, सिंपली ये जो सप्लाई कर्व था, सब जो बैकवर्ड मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व का, बिकॉज अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज ये बैकवर्ड स्लोप होगा. दैट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज द बैकवर्ड मूवमेंट. सो this we will make, there is a difference between expansion and contraction and increase and decrease of the supply. I hope that is clear to you guys, and it's not like much typical or much hard thing to understand. अब causes क्या क्या है, देखो increase और decrease के, हमने expansion और contraction को तो देखा था, only price was the main reason, but increase और decrease of supply के there are other reasons. Improvement in like technique of production, maybe technology change हो गई है, इस वजह से लाइक इंक्रीज इंप्रूवमेंट हो गया है सप्लाई में, तो दैट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई. फॉल इन प्राइसेस ऑफ अ रिलेटेड गुड, मतलब जो अदर गुड्स है उनके प्राइसेस चेंज हो गए हैं, तो दैट्स व्हाई मे बी इस गुड का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट जो प्रोडक्शन की कॉस्ट थी, दैट इज फैक्टर्स की, जो भी लेबर और कैपिटल हमें मिल रहे थे, तो उनकी कॉस्ट कम हो गई है. या फॉल इन एक्साइज टैक्स, मे बी टैक्स में कम वो हो गया, या डिक्रीज होगा, तो मे बी डिक्रीज इज बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, मतलब ज्यादा जो टेक्नोलॉजी वो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई है और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है.
डिक्रीज होगा इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से, क्योंकि फिर रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ा है तो वही ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, ये वाली कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगी. सो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या राइज इन द एक्साइज टैक्स दैट विल डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई. So I hope guys now it is clear, increase and decrease and the contraction and expansion of supply curve. I hope you can even make the law of supply curve, the statement like sakte ho, you can make the schedule also, you can make the diagram also, and you can even make the change between individual and market supply curve, and you can even explain that what is expansion and contraction and what is increase and decrease in the supply curve. Now difference अगर हम इसको increase in supply और expansion of supply में लिखें, so definitely it refers to shift in supply curve, और जबकि expansion of जो supply curve था वो along the movement था, along the supply curve movement था. So there is a rightward shift in the supply curve. It is due to decrease in the prices of the related good, technological change, increase in the number of firms. देखो अगर number of firms भी बढ़ जाती है तो definitely it will increase the supply. So it will be a forward movement. Lower supply, lower price of the factors of production, मतलब factors of production जो है वो सस्ते हो गए हैं और definitely we can increase the supply, quantity supplied. Expectation of the fall in price in near future. अगर सोचेंगे कि expectation है कि future में prices कम होंगे, so right now we will just supply more of the product because अभी prices सही हैं. अगर future में कम हो गए तो obviously definitely we will lose our profit. Higher subsidies to the firm, even that may increase the supply of that particular quantity, like commodity. अब expansion की बात की थी, expansion along the curve होता है, simple price की वजह से change होता है. The producers move to the right on the same supply curve पे वो simple right shift हो जाएंगे, like point change होगा simple. It is due to the rise in the price of the commodity. So rise in the price of the commodity की वजह से ये expansion होता है, but increase जो supply है, increase of supply के there are different factors responsible. So increase in supply और expansion में again देखेंगे S curve rightward shift कर रहा है और prices same है, but expansion में prices change हो रहे हैं, that's why it is moving along the curve. तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में जो इंक्रीज इन सप्लाई में साइड है, Q से Q1 क्वांटिटी हुई है एट द सेम प्राइस, तो सिंपल जो सप्लाई कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया. और एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है, प्राइसेस भी चेंज हो रहे हैं. सो देयर इज लाइक इस प्राइस पर ये क्वांटिटी है, प्राइस राइज होते ही दूसरी क्वांटिटी हो गई, तो वहां पर भी क्वांटिटी राइज है, यहाँ पर भी क्वांटिटी राइज है, बट देयर इज लाइक इंक्रीज एंड देयर इज एक्सपेंशन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस नाउ. कॉन्ट्रैक्शन में अगेन, कॉन्ट्रैक्शन में भी डिक्रीज इन सप्लाई जो होता है, इट रेफर्स टू द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टुवर्ड्स द बैकवर्ड, इसको या लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं. मे बी प्राइजेस जो रिलेटेड गुड के हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, या यूज ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज हो गए हैं, या तो हायर प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हायर टैक्सेस हैं, और एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइसेस इन न्यू फ्यूचर. सो मतलब राइट नाउ दैट विल डिक्रीज द सप्लाई. बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस डिक्रीज. सो जब प्राइस डिक्रीज होगा ओनली देन देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. अब now decrease in supply, it is defined as a fall in supply at the same price of a commodity. तो यहाँ पर backward movement दिखा दिया S curve का, there is a backward movement and price is the same thing. Contraction of supply में what we are doing, there is a decrease in prices, like prices पहले P से P1 पे आ गया, तो definitely there is a decrease and that's why the quantity is decreasing and quantity is contracting. तो यहाँ पर decrease in supply, यहाँ पर contracting in supply. I hope again clear. अब time factor और supply को हम देखो कैसे देखते हैं. So there is always a short run situation and the long run situation. Because short run situation में it is very hard to change the supply. Supply cannot be just changed like that in a short run because we have production limitation. एक कैपेसिटी की लिमिटेशन होती है which we may increase on long term basis. Suppose करो हमें नई मशीनरी मंगवानी है या कुछ भी और लाइक लैंड इंक्रीज करनी है किसी चीज के प्रोडक्शन में, दैट विल हैपन इन लॉन्ग टर्म बेसिस, लाइक लॉन्ग रन में होगा. शॉर्ट रन में ओनली वी कैन चेंज द लेबर, वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन चेंज, बट थ्रू दैट लाइक वी कैन नॉट चेंज द सप्लाई. That's why sometimes supply is rigid in the short run. So very short time period, market period, the time period when production cannot be changed. So जब production change नहीं हो सकता बिल्कुल और supply जो होती है बहुत rigid होती है, that is like shown by the vertical supply curve. So इसको हम बोलते हैं rigid supply. इससे ज़्यादा like supply cannot be changed. So that's why it like the time had shown as short run, like very short time period or market period. So pulling up short run. So short run में quantity supplied cannot be changed. I hope that is clear. But if you guys allow me, because we had already missed so many classes, like 2 classes already miss हो गई हैं. I think 1 ही class हुई थी, second class में there was some technical error and 2 classes तो बिल्कुल भी conduct नहीं हो पाई because there was a like connection problem again. So if you just allow me, I'll stop this presentation and I will share another presentation with you, that is elasticity of demand. So I hope that would be okay with you guys. अच्छा कोई मुझे बीच में बोलना है, like just let me read your chat. I'm so happy to see that you guys can respond. So good afternoon. In last class we discussed theory of demand. Yes, Nanak, we had discussed theory of demand. Okay.
सो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, देखो व्हाट्सएप ग्रुप गाइस, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन सकता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम का ही एक ग्रुप बन सकता है, ओनली दैट लिंक वो लोग टेक्निकल टीम ही बना सकती है, हम लोग नहीं बना सकते। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास नहीं है अवेलेबल गाइस, सिर्फ टीम ग्रुप बनेगा, बिकॉज अगर अब 244 अटेंडीज हैं, इन 244 अटेंडीज आई कैन नॉट, समटाइम इट इज वेरी हार्ड इवन फॉर मी टू रिप्लाई एवरीवन, that's why even I request to the technical team, please make a group, so we can reply at one place and I can provide even the PPTs I make for the students. Good afternoon everyone, like I heard. Like team is damn slow actually. Why ma'am economic record class video don't upload to DU SOL website? Economic recorded class video मेरी last year की classes होंगी available, but for this first year I don't know why it is not there. But I have already my PPTs are with SOL, my videos are with SOL. So that is not my thing. But this year definitely, because first year मैंने last Jan में भी first year पढ़ाया था. Right now also I'm teaching their first year, right? So why am I economic? Okay, please upload. Yeah, that is not in my hand. That is in the technical team's hand. I'm just here to teach. So SOL is recording me. Only SOL people can do that. Okay, I cannot upload the video. I can upload the PPT wherever they will be sending me the folder they will provide me. The PPTs. बुक परचेज करनी है मैंक्यू की, देखो मैंक्यू की रीडिंग है, ऑनलाइन रीडिंग अवेलेबल है, और जहाँ पर भी अभी जैसे मुझे चांस मिलेगा लाइक अपलोड करने का चीज़ों को, तो आई विल अपलोड दैट PDF ऑल्सो। मैंक्यू जो है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली मैंक्यू इज रेफरिंग जो बुक है, सो मैंक्यू को ही वो करिएगा इकोनॉमिक्स में। कितनी बुक परचेज करनी, कौन सी बुक परचेज करनी है? ओके, मैंक्यू की रीडिंग अवेलेबल है, यू नो नीड टू परचेज, व्हाई टू वेस्ट मनी लाइक व्हेन द ऑनलाइन थिंग इज अवेलेबल। सो सॉफ्ट कॉपी है। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर इटसेल्फ अभी तो मैंक्यू में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई वी आर जस्ट डिस्कसिंग, फर्स्ट यूनिट अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। एनी ग्रुप यू शेयर? यस, मैं वही बात कर रही हूँ टेक्निकल टीम से कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप जहाँ पर हम लोग बात कर सकें, या जहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही अपलोड कर सकें चीज़ों को। And ma'am, can you please provide us ManQ latest version digitally, or you can have the link of the book with us in section. We'll make economic classroom in Google Classroom and fast of the Google Classroom में देखो Gmeet पर तो क्लास लेना और easy है, but the thing is Gmeet पर मैं classes इसलिए नहीं ले सकती हूँ because only it will allow only 100 participants. It won't allow much. हम टीम पर इसीलिए हैं because that is allowing like 251 students are here right now. And so definitely Google Meet won't allow that much of them. Please provide us the notes through WhatsApp. Dear WhatsApp group, देखो 251 attendees. I have already WhatsApp मेरा full रहता है, तो WhatsApp पे मैं ग्रुप नहीं बना सकती हूँ. Even the numbers, मैं अगर यहाँ पे आपको अपना भी नंबर दूंगी, there will be a lot of messages, मेरा WhatsApp hang हो जाएगा. So the thing is, the best solution to make a group over here on Microsoft Team. And please tell, मैं भी अपनी तरफ से बोलती हूँ टेक्निकल टीम को कि ग्रुप बना बेटा, that would be much easier to contact it. क्लासरूम PDF शेयर कर दूँ, मैं ऐसे करती हूँ, एक गूगल ड्राइव बना देती हूँ. अगर वैसे भी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट